हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ RJXeus एंड लाइक एवरी टाइम आज भी आपसे मुलाकात हो रही है रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल्स पर। लेकिन आज खुश हूँ मैं क्योंकि आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत जुड़ी है। जी हाँ, पेशे से टीचर है और आपको बता दूँ एक ऑथर है, एक पोइट है। मेरे साथ है मंजूर आकाश। आकाश, वेलकम टू रेडियो चिनार 90.4 FM। थैंक यू सो मच। आकाश, जो भी देखने वाले हैं या जो आपको देख रहे हैं इस टाइम, सबसे पहली बात मैं तो बता चुका हूँ, ऑथर है, पोइट है। तो आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ऑथर है या पोएट या पोएम्स का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ आकाश? In the beginning, I wrote poems, sir. I wrote poetry. So after that, when I wrote the poetry, I thought that I should turn to prose writing. And when I started writing in prose, I started becoming a columnist, and I started publishing these books. Since this book, A Harvest of Reminiscences, this is my fourth book. And the first book that I wrote was the Verses of Heart. That was in poetry. Because whenever you start, so far as the writing journey is concerned, if you'll come across so many writers, most of them will tell you that we started our journey from this poetry. Poetry is the mother of all, languages. At what age? किस age में आपने poetry poems? I was just in class 9th those days when I wrote the first poem. And since then I just kept on, writing. And when I published my first book, that was in poetry, the Verses of Heart. After that I started turning to prose and wrote that handy volume first, which I told you, that has those letters and essays, how to excel that creativity in the children in schools. And then I wrote that the legacy of light, that is basically the contribution of previous teachers, how they taught us. And that contribution I wrote in the book in order to tell the teachers who are presently serving the Department of Education that this will help us. That if Akash, tell me a thing, when it comes to like poetry, poems, or being an author. Yes, sir. So how being a teacher intervened in between the two? Yeah, exactly. So when I was in the university, my inclination, mera jo jhukav, I mean to say, that was towards this writing. But since English was the subject in which I have done the masters, my post graduation, twice I have done the post graduation. Wow. And this post graduation and that B.Ed, which is compulsory for becoming a teacher, that was my eligibility for the teacher. Okay. And writing was basically my talent. So पहले से decide कर रहा था that I want to be a teacher, or later you decided I will be a teacher and an author? Yes. My dream was to serve the Department of Higher Education, because my experience, I have taught in colleges for 3 long years. I have worked in Sopore Degree College, in Handwara, and in Women's College. And from Women's College I joined the new assignment, that is I became the teacher. But I was thinking that I will do this doctorate course of PhD in English. But those days, it was something, I was caught up in a mess like that. Should I, because in my locality there was, department was asking for a candidate who is eligible, and that I was eligible for the post. So I was supposed to join that assignment, and I had to left that, the dream halfway to do the PhD, then come, do the net and set exams, competitive exams, then come in this, higher education, because that is the eligibility, having a PhD course and net set, so that is the eligibility. But then when I became the teacher, I remained busy with the school education department and that dream to serve the Department of Higher Education, because most of my friends who are in the University of Kashmir, they are my friends, dear scholars, they are telling you that you should have been in this higher education department, because the way you discuss with us things, and the way we look at your contribution, 4 books, and that too it seems that you have not done anything. But to us, when we prepare a thesis like 40 pages thesis or 50 pages thesis, that takes us some 6-7 long years in the university, in the camps. So they tell me that you should have been in this, but I'm telling them that my eligibility to have PhD course, to have done the net set like courses, that is the eligibility for higher education. Because unless and until you are not eligible, you cannot sit in an interview or etc. So I told them that I don't have this PhD or net set like exam. So मंजूर, आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम पोइट्स की बात करें, पोएम्स की बात करें या
पोइट्स की बात करें, विच वन इज़ योर फेवरेट जिसने आपको इंस्पायर किया है, और क्यों आपको शेक्सपियर कहा जाता था यूनिवर्सिटी के दिनों में? यूनिवर्सिटी के दिनों में मैं ज़्यादा शेक्सपियर को ही पढ़ता था, क्योंकि शेक्सपियर के प्लेज पढ़ने पड़े। वो मैंने वो बोला आपको दैट दे वर इन वो पोइट्री में वर्स फॉर्म में थे, वर्स शेप में थे। उसके सारे 37 प्लेज ही हैज़ रिटन, शेक्सपियर हैज़ रिटन। तो वो मुझे पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि जब पोइट्री में पढ़ने का मौका मिला तो एक वो पोइट्री टेस्ट इंसान की डेवलप हो जाती है सर। तो उसके बाद मैंने शेक्सपियर के साथ साथ मैंने इंडियन लिटरेचर में टैगोर की, गीतांजलि के बहुत सारे पोएम्स पढ़े। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लिखा है, वो जज्बे से लिखा है, उसने वो कंपैशन से लिखा है वो। तो उसमें वो इंसान को मिलता है कि दैट अगर आदमी लिखे तो पोइट्री में, और पोइट्री में जब आप लिखते हो सर, तो पोइट्री में टेस्ट होता है आपकी राइटिंग। बिल्कुल, आपकी राइटिंग का जो लिटमस टेस्ट होता है वो पोइट्री होती है। तो प्रोज में फिर आराम से इंसान अपने कंस्ट्रक्शंस करता है, सेंटेंसेस की आराम से कर पाता है। कभी अगर उसमें कुछ चेंज करने की भी ज़रूरत होती है वो चेंज करता है, लेकिन पोइट्री में इंसान को बहुत ही वो क्या बोलता है, एक हायर लेवल का ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं भाई मुझे पोइट्री में जिस तरह टैगोर की पोइट्री में बोलूँ, या शेक्सपियर की ये जो ड्रामाज उसने वर्सेस में लिखे, तो इस तरह, या उर्दू मैंने बहुत सारे पोएम्स पढ़े, पोइट्री पढ़ी। तो मैं बोलता हूँ आपको सर ये कि इंसान को ये पोइट्री जो है, पोइट्री से ही फिर शुरुआत हो जाती है। फिर आदमी बाद में प्रोज में भी लिखे, लेकिन शुरुआत असल में उसी से हो जाती है। अगर हम बात करें आकाश, तो आपने साइंस पढ़ा है, यस सर, उसके बाद यू हैड शिफ्टेड टू लिटरेचर, और अगर हम देखें तो जो भी महान लाइक लेखक रहे हैं, या लाइक इंडिया में जो भी महान हस्तियां रही है, मैक्सिमम ऑफ देम हैज स्ट्रगल्ड व्हेन इट कम्स टू स्टडीज। तो आपकी लाइफ में कभी स्टडीज से रिलेटेड स्ट्रगल रहा है कि जॉब करना है, या पोइट बनना है, या ऑथर बनना है, इनको चूज़ करने में इन चीज़ों को, या कभी पढ़ाई से रिलेटेड घर में या लाइफ से रिलेटेड कोई स्ट्रगल रहा है व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़ और बीइंग अ टीचर, ऑथर और पोएट? मेरी जहाँ तक मेरी स्टडीज़ का ताल्लुक है सर, मेरी स्टडीज़ और स्ट्रगल दे वेंट आई मीन साइमल्टेनियसली अहेड, क्लोज, या साथ साथ चलते थे। तो कुछ वक्त तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ा, पैसा कमाना पड़ा, बाद में वो पैसा अपने आप पे इन्वेस्ट करना, अपने स्टडीज़ पे। मैं जब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में था तो उन दिनों मुझे 2 सेमेस्टर क्वालिफाई करने के बाद मुझे वापस आना पड़ा, पैसे की कमी थी घर में, वो हालत नहीं थी सर। तो उसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने हंदवारा के एक स्कूल में एक 2-3 महीने तक पढ़ाया। मैंने एक सैलरी जो बार रखा था उन लोगों ने मेरे लिए, मैंने कहा मैं असल में फलानी यूनिवर्सिटी में कोर्स कर रहा हूँ, MA का कोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा। उन लोगों को भी इंग्लिश टीचर की, पर्टिकुलरली इंग्लिश टीचर की ज़रूरत थी, उन लोगों को मेरा पढ़ाना वो अच्छा लगा। तो मैंने 1-2 महीने तक पढ़ाया, 3 महीने तक। बाद में वो पैसे जो थे वो मेरे वहाँ इन्वेस्ट हो गए, उन लोगों ने मुझे वो पैसे बाद में दिए। मैं यूनिवर्सिटी गया था, फिर एक लड़का आया कश्मीर से, उसने मुझे वो पैसे दिए, कहा ये फलानी जो वहाँ की सैलरी थी उन लोगों ने वो पैसे दिए। हैव बीन डूइंग ग्रेट, और आप आज भी लाइक 4 किताबें, और अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो पीस अवार्ड आपने, नेशनल पीस अवार्ड मिला था। बिल्कुल, तो उस बारे में बताएं, लाइक हाउ इट फील्स कि आप पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अचीवमेंट्स भी जुड़ती जा रही है आपकी जर्नी के साथ। सर अगर जब आप पढ़ोगे सर, मैंने कहा खुलूस से आप जब पढ़ोगे तो अवार्ड्स आते रहेंगे। जैसे आप अगर एक क्लासरूम में अच्छी तरह से पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे, लगन से पढ़ोगे, तो आप टॉप करोगे। और टॉप करने के बाद आप जब आपने टॉप किया तो डेफिनेटली अवार्ड तो मिलेगा आपको। कभी अवार्ड खुल के मिलता है, कभी यूनिवर्सिटी में अगर एक प्रोफेसर, एक टीचर की अप्रिसिएशन या छोटी सी एक सर्टिफिकेट मिले, एक छोटा सा कप मिले आपको, ट्रॉफी मिले, तो वो भी अवार्ड है। तो ऐसे ही मेरा सफ़र भी था, मैं साथ साथ मेहनत करता बढ़ा, और साथ साथ मुझे बीच में अप्रिसिएशन मिली, तो मैं इन अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करता गया। तो ऐसे में मैंने एक अवार्ड मिला तो लगन बढ़ती गई, दूसरा अवार्ड मिला और लगन बढ़ती गई। तो मेरे जो साथी मुझे देख रहे होंगे इस वक्त, अप्रिसिएशन की वजह से आगे बढ़ने, बिल्कुल। मुझे लगता है आजकल हमारे स्कूल एजुकेशन में भी अगर बच्चों को आप अप्रिशिएट करोगे ना, पॉलिश करने से जूता भी चमकता है। अगर आप जूते को पॉलिश करोगे चमकता है। जितना इनकरेज करोगे ना बच्चों को, जितना इनकरेज करोगे, हमारे पेरेंट्स जो है इस वक्त अगर वो अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे, इनकरेज से वो ग्लो करेंगे। एग्जैक्टली सर, वो ग्लो करेंगे, वो चमकेंगे। आकाश, आपसे जानना चाहूँगा, आपने 4 किताबें लिखी है अब तक, लाइक विच वन इज़ योर फेवरेट, क्यों
और किस तरह फेवरेट बनी हो? दिस न्यू बुक जो सर है, नई किताब जो मेरी हार्वेस्ट ऑफ रेमिनिसेंसेस, ये मेरी सबसे प्यारी बुक है। अब बोलोगे सर क्यों है ये? मैंने कहा कि अगर मैं अपनी यादें ऐसे ही छोड़ता, मैं लिखता नहीं उनको, एक हिस्ट्री नहीं रखता, वो अनसुनी रह जाती, अनटोल्ड रहती। तो एक लेगेसी जो है, ये मेमोरीज की लेगेसी, मैंने इस किताब में वो अपनी यादें, चाइल्डहुड मेमोरीज एंड द मेमोरीज ऑफ माय एडल्टसन। यू साउंड सो फैंटास्टिक। हमसे बात करने के लिए आकाश शुक्रिया, एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली विल इनवाइट यू फॉर मोर। आपसे बात जारी रहेगी, करते रहेंगे, इंशाल्लाह बुलाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप इंस्पायर हुए होंगे। एंड एक लाइन जो मेरे दिमाग में आती है, यू नेवर नो हु यू आर इंस्पायरिंग, सो बी काइंड, बी डेडिकेटेड, बी लॉयल। दिस इज RJXeus साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और ख़ास शख्सियत के साथ, या किसी नई जगह पर आपको घुमाने ज़रूर ले जाएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप रेडियो चिनार के प्लेटफॉर्म्स पर आए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रेडियो चिनार 90.4 FM @gmail.com पर, या 8899904904, या आप www.radiochinar.in पर लॉगिन करके हम तक अपना प्रोफाइल पहुंचा सकते हैं। एंड यू कैन बी योर नेक्स्ट गेस्ट इन आवर स्टूडियो। आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारे कैमरा क्रू हकीम जुनैद सबको इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, मासलामा।